Hello friends, hi, how are you all are? Yes, I'm Komal Hirani and I'm connecting with you from Gujarat state and I want to talk about the Surat sir. They created English Bolega Abhiyan channel and I have joined that channel. It's a nice channel and Surat sir has doing a great job and as well as he is a great English tutor and he has a great command, he has a great ability to teach us English effective way. And thank you so much sir. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं और ठान लिया तो डेफिनेटली बोलेंगे. Hello sir, good morning, how are you doing? I'm fantastic, Komalji. First, I would like to welcome you in the live session of India English Bolega Abhiyan. India English Okay, Bolega Abhiyan लाइव रैपिड फायर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, कोमल जी. thank you so much sir. I am very much glad to connect with you in rapid fire session. Thank you so much. Great. This rapid fire session, it will help many English learners. They want to uh, English improve their English improvement, and it will really help. Full video will be, because I know that, and like this video just I made and it became very popular, and nowadays it will be also popular. Okay, then Yeah, are you ready for rapid I fire? no, I didn't. I haven't connect before that. This is my first rapid fire. I hope it will be good. Fantastic. It will be fantastic. Only you need to. I will speak in Hindi. You need to translate in English. If you can't, Oh, I can tell you. Many things you will learn. Yes. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए. I should have to speak English. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए. I should speak English. Yes, I should speak English. वे लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए. वे लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए. They must have speak English. No, they They must speak English. they should speak English. They उन should लोगों speak English. yes, use of should. Should मतलब चाहिए. Yes, only should. वे लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए. They should speak English. Yes, बच्चों को इंग्लिश बोलना चाहिए. Okay. Children should speak English. वेरी गुड. बूढ़े लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए. Elder person should speak English. वेरी गुड. मेरी माँ को इंग्लिश बोलना चाहिए. My mother should speak English. वेरी गुड. वे लोग इंग्लिश बोलते हैं. They are speaking English. They speaks English. They speaks English. दे स्पीक इंग्लिश. वे लोग इंग्लिश बोलते हैं. They speaks English. स्पीक ओनली स्पीक्स नॉट स्पीक विथ Only दे प्लूरल. यस, ओनly विल यूजिंग वर्ब फॉर्म. वर्ब English. फर्स्ट फॉर्म. यस, दे स्पीक इंग्लिश. वे लोग इंग्लिश बोलते हैं. They speak English. लेकिन मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोलता है. But my brother didn't speak. My brother haven't speak English. बट माई ब्रदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश. लेकिन मेरा But भाई my इंग्लिश नहीं बोलता. English. Okay. My brother does not speak English. वेरी गुड. लेकिन मेरी बहन इंग्लिश बोलती है. Okay. But my sister speak English. माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश. विथ सिंगुलर पर्सन वी यूज वर्ब फाइव. मेरी Oh. लेकिन मेरी बहन इंग्लिश बोलती है. My sister speaks English. वेरी गुड. मेरे पापा कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं. Okay. My father speaks sometimes English. माई फादर स्पीक्स इंग्लिश समटाइम्स. कभी कभी. English. लेकिन मेरी माँ रोज इंग्लिश बोलती है. Okay. My mother speaks English every day. बट माई मदर स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे. Every day. My mother speaks English every day. मेरे चाचा ने एक बार इंग्लिश बोलने का कोशिश किया. Okay. किया था. किया या फिर किया था. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू. मेरे चाचा ने एक बार इंग्लिश बोलने का कोशिश किया था. My uncle had tried speak English one time. Spoke English one time.
My uncle tried to speak English once. बोलिए. Uncle My try to my speak this uncle, once. my uncle tried to speak English one time. One time. Okay. Hmm. My uncle tried to speak English one time. मेरी चाची हंस दी. मेरी चाची? मेरी चाची हंस दी. I didn't understand, sir. मेरी मेरी चाची चाची. हंस दी. My aunt laughed. मेरी चाची हंस दी. My aunt laughed. Subject plus verb to. My aunt laughed. मेरी चाची My हंस aunt. दी. Okay, my aunt laughed. Laughed. फिर मेरे चाचा कभी कोशिश नहीं किए. Then my uncle haven't try again. Doesn't Again my uncle my never uncle? tried. फिर कोशिश नहीं की. Again my uncle never tried. फिर मेरे चाचा कभी कोशिश नहीं की. Okay. Then my लेकिन uncle never try again. मैं आपको बताता हूँ. I tell you, मैं आपको बताता हूँ. I tell you. कभी आप हार मत मानिए. Never lose your hope. नेवर लूज योर होप. वेरी गुड. ये हो सकता है. आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे. Definitely you will be fluent. You will be fluent in English. वेरी गुड. वन डे. एक दिन. Okay. आप Definitely वहां you जा will. सकते थे. Yeah, आप sorry. वहां जा सकते थे. आप वहां जा सकते थे. जा सकते थे. हम्म. You could have gone there. ओनली कुड प्लस वर्बन. यू कुड गो देयर. आप वहां जा सकते थे. You could go there. आप खाना बना सकते थे. You could make food. आप इंग्लिश बोल सकते थे. You could speak English. आप कोशिश कीजिए. You must try. आप रोज कोशिश कीजिए. You must try every day. एक दिन आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे. Definitely one day you will speak fluently. तो इसे बनाया जा सकता है. Sorry? क्या बनाया इसे जा सकता बनाया है? इसे इससे बनाया जा बनाया सकता इससे हाँ. बनाया जा सकता है. है. इसे बनाया जा सकता है. इट Okay. कैन बी प्लस इट कैन बी मेड. ठीक है. Can be made. इसे बन इट कैन बी मेड. इसे बनाया जा सकता है. इट कैन बी मेड. आपको बुलाया जा सकता है. Okay. आपको कैन बी बुला. प्लस वर्ब. It can be. आपको बुलाया. It can be. It can be invite you. आपको बुलाया जा सकता है. तो इसमें सब्जेक्ट यू है. यू कैन बी कॉल्ड. आपको बुलाया जा सकता है. Can be called. You can be. आपको हंसाया जा सकता है. You can be laughed. यू कैन बी मेड लाफ. हंसाना का होता है मेक लाफ. वर्ब 3 मेड लाफ. आपको हंसाया जा सकता है. You can be made laughed. वेरी गुड. मैंने सोचा. I think. I आई thought. थॉट. I मैंने thought. सोचा. हाँ I मुझे thought. इंग्लिश में मुझे बात करना चाहिए. I should speak English. I have to speak in English. मुझे इंग्लिश में बात करना चाहिए. आई शुड टॉक इन इंग्लिश. मुझे इंग्लिश में बात करना चाहिए. I should speak English. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए. आई शुड स्पीक इंग्लिश. बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल करेंगे. मुझे इंग्लिश में बात करना चाहिए. I should talk in English. I should talk in English. आई शुड टॉक इन इंग्लिश. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने का कोशिश किया. I were tried so many times to talk in English. I tried many people to talk in English. I tried many people to talk in English. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने का कोशिश किया.
I tried so many people with talk in English. लोग लोग डरते हैं. People's afraid. पीपल अफ्रेड. बट ये एक भाषा है, आप सीख सकते हैं. But this is language, we should learn it. आप इसे सीख सकते हैं. यू कैन लर्न इट. You can learn it. Okay. बहुत सारे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं. So many children, they speak English. यस. और आप भी बोल सकते हैं. You can also speak English. बस आपको बोलना है. जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. But you have to speak English. If you can't able to speak English, we will never let you go. जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. Until want speak, want leave. इसको until want speak. जब तक बोलेंगे नहीं. Until want speak, want leave. तब तक छोड़ेंगे नहीं. Okay. Until want speak, we will never Want let leave. you go. We will never let you go. Want speak. Until want speak, want leave. तब तक छोड़ेंगे नहीं. Until want, want. yes, until want speak. Sir, again. Want leave. Want leave. Okay. हाँ. Want leave. जब तक बोलेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं. अगर आप ये इसको याद कर लेंगे, अगर आप इसे याद कर लेंगे. ओके. अगर आप इसे याद कर लें. If you remember. आपका इंग्लिश बोलना तय है. तय है. Okay. It must be fixed to speak in English. आपका इंग्लिश बोलना तय है. योर स्पीकिंग इंग्लिश इज फिक्स्ड, या फिर बोलेंगे परमानेंट. इसमें एकदम तय. आपको कोई नहीं रोक सकता है. Okay, never stop you. Nobody can stop. Nobody can stop you. कोई नहीं रोक सकता. Nobody can stop you. मैं जाता. If I go, if I gone. वुड का इस्तेमाल करेंगे. मैं जाता, आई वुड गो. अगर would मैं go. जाता, अगर मैं जाता, आई वुड गो. I would go. तो मुझे बहुत अच्छा लगता. I would feel better. I would feel better. I would feel very nice. I would feel very nice. मुझे बहुत अच्छा लगता. I would feel very nice. मुझे बहुत अच्छा लगता. I would feel very nice. लेकिन मैं नहीं गई. But I didn't go. क्योंकि मुझे कुछ काम था. Because I was some work. मुझे कुछ काम था. I had some work. मुझे कुछ काम. I had some work. I had some work. Very nice. Okay, that's enough for today. And again, next class, just we will make like this video, and it will be very fruitful for everyone. Yes. What do you say about it? Yeah. Thank you so much, sir, given me this opportunity. And this is my first rapid fire. Definitely, I would like to, make another videos of rapid fire. And yes, I am making mistake, but definitely, while doing a mistake, we learn this language. Very good. Very. Actually, failures are the success of pillars. That's why we should never afraid of failures, making mistakes. Because when you make mistake, when you do like this mistakes, really you learn something. Yes, that's why just we need to think positive. One day we will be correct English speaker, good fluent English speaker, and just we make our India one day India English Bolega Abhiyan. This Abhiyan, it will be one day successful. Many people, they are English learners, they will be fluent in this language. This is my guarantee. Okay, thank you for giving me this wonderful opportunity with you, Komalji. Next time, see you. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Bye.